No, it definitely is a huge, huge shock and a loss, I will say, to the Islamic Republic, the death of its supreme leader. And a 40-day mourning is, of course, part of their procedure. The point is that Israel and America have been able to take out the top guy in Iran. That is quite something. It would be quite a shock to the Iranian people also. And I think the stated purpose of this attack was also to decapitate the Iranian leadership. The Israeli and American attack has succeeded in that. Not only Khamenei, also the commander of the Revolutionary Guard has been eliminated. So that definitely brings a lot of loss of morale also to the forces, Iranian. And in any case, the Iranian forces are no match technologically to the Israeli and Americans. But yes, Iran will retaliate, will continue to retaliate. Let us see how much and what difference can they make. Hmm. So the US President Donald Trump posed that Khamenei, one of the most evil people in history, is dead. How do you see this statement when Donald Trump calls him the most evil people in the history? See, that is, I think, very subjective as to who is the most evil person in the history. But according to Trump, yes, they have been calling the Iranian regime a evil regime, and the head of the evil regime would obviously be evil, according to Trump, and also according to Netanyahu. Both of them have been very clear in their objective that they would want the Iranian regime to go, that the regime is wicked, that the regime is evil. That is what Netanyahu says and Trump says. That is their take on it. If you ask the Iranian people, at least some, maybe they will say he was the best guy ever. So it depends which prism you are looking from. So the Israeli Air Force tweets that their fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian defense leadership. So they also said that the world is a better place without them. So how true is this statement, or it is just an information warfare? Of course, there's a lot of information warfare going on, but what we have seen repeatedly over the years is that the precision strikes by the Israelis and Americans are truly precise. What also helps them is that they have informers on the ground. You know, the Hezbollah chief, you name it, in the last 3 years, people have been specifically targeted and specifically eliminated. So that's quite commendable, I would say, from a military, operational, oblique intelligence point of view, that they know exactly who is where, how to take them out. I mean, killing Khamenei is no simple task, specifically taken out. They would have made some preparations to protect Khamenei, did not succeed. Similarly, the chief of the Revolutionary Guard did not succeed. And it's not only one, multiple such personalities have been targeted and eliminated by the Israelis and Americans through a combination of electronic and other surveillance as well as informers on the ground inside the organizations. So, amid the US-Iran conflict, India is deeply concerned over situation in Gulf and calls for dialogue and diplomacy. How do you see this move of India? No, absolutely. See, India is concerned. It's in our neighborhood. And in any case, violence is something that we absolutely do not wish to see happening anywhere in the world. Secondly, also, we have a large Indian diaspora in this region. We have over 10 million people of Indians working in these regions. So their safety and security is also a concern, as well as our energy supplies, both crude oil and gas, come to the Straits of Hormuz, a substantial portion. That is also a matter of concern for us. So there are multiple reasons for India to be concerned and, of course, to call for peace, diplomacy, and dialogue. इसराइल के हमले में मौत हो गई है। 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। ये खबर वहाँ की सरकारी न्यूज एजेंसी और साथ ही साथ रॉयटर्स ने भी कंफर्म की। जी हाँ, खामनेई की मौत हो गई है, डेफिनेटली एक फैक्ट है, अब दिख रहा है। इसमें क्लियर कट फिर से दर्शाता है कि इसराइल और अमेरिका का कॉम्बिनेशन जब हो, उनकी इंटेलिजेंस जब हो, वो प्रिसाइज
टारगेट करके बड़े से बड़े लीडर को कहीं भी छुपा भी हो उसको वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये ईरान के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान है। अपने देश का जो फिलहाल उनका सुप्रीम लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, उसकी मौत होना नुकसान है। और ईरान इसके रिटेलिएशन में कितना कर सकेगा, क्या कर सकेगा, देखते हैं आगे। बट चांस कम है कि ईरान कोई बड़ी गेम चेंजिंग रिटेलिएशन कर पाए। सर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई की मौत के बारे में बताते हुए पोस्ट किया और उसे इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति बताया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसको अगर इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति बताते हैं तो ईविल इस तरह के तो और भी बहुत थे शायद, या ईविल बहुत लोग रहे हैं। अब नजरिया है देखने का। ट्रंप को और नेतन्याहू को डेफिनेटली ये ईविल दिखता है। ईरान के अंदर जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको तो खामनेई हीरो दिखता है। तो नज़रिए पे डिपेंड करता है। बट यस, ट्रंप और नेतन्याहू जिस ऑब्जेक्टिव से निकले थे कि ईरान की लीडरशिप को डीकैपिटेट कर देना, सर काट देना पूरी लीडरशिप का, उसमें वो फिलहाल सक्सेसफुल हुए हैं। सर, इजरायली एयरफोर्स ने ट्वीट करते हुए बताया है कि उनके फाइटर जेट्स ने कई मिलिट्री ठिकानों पर ईरान में हमला किया, जिसमें से ईरान की 7 सीनियर ऑफिशियल लीडरशिप उनकी आर्मी की मारी गई है। जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, इसराइल कंप्लीट डोमिनेट करता है एयर स्पेस। ईरान की एयर डिफेंस कोई खास नहीं काम आई, पिछली बार भी देखा था, अब की बार भी देखा था। इजरायली एयरफोर्स बड़ा प्रिसाइसली काम करती है और एलिमिनेट करती है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड को भी मार दिया गया है। और इसराइल ये अभी एक बार नहीं, मल्टीपल बार इसराइल ने इस तरह के इंडिविजुअल्स को मार के एलिमिनेट करा है। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म है, प्रिसीजन है, टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है, जो भी कहिए, इन सब का कॉम्बिनेशन का एंड रिजल्ट ये है कि इसराइल अटैक करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करता है और कोई नुकसान नहीं होता इसराइल को। सर, गल्फ में बढ़ रहे तनाव के लिए भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है और साथ ही डायलॉग की बात की कि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए और जो युद्ध है उसको रोका जाए। देखिए, भारत हमेशा किसी भी मुद्दे को लेकर के कहता है कि बातचीत से सुलझाई जाए, पीस एंड डिप्लोमेसी से। और फिलहाल ये जो युद्ध हो रहा है ये तो हमारे नेबरहुड में है, पहली बात। सेकेंडली, हमारा बहुत बड़ी तादाद में भारतीय लोग यहाँ रहते हैं, नौकरी करते हैं। करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं यहाँ पर। तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी चिंता है, क्योंकि अब जैसे ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो जान माल का खतरा है, डेफिनेटली यस। और इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी जो भारत की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो क्रूड ऑयल आता है हमारा बड़ी तादाद में, कतर से जो गैस हम लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। तो जितना समय यहाँ पर युद्ध के माहौल रहेगा उतना समय हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और महंगाई को लेकर के हमें चिंता है।